Sebastian and Freda, just tell us about your journey, from where you came and how long it had been. We started in November 2020. Hmm. Then we left Germany without knowing where to go. Huh? So now we are in India, and we are very happy that it was possible to come all the way here. And you started from Germany, then Armenia, Azerbaijan and Pakistan, huh? Okay, Germany, Austria, Slovenia, Croatia, Bosnia, Montenegro, Albania, North Macedonia, Bulgaria, Turkey, Georgia, Armenia, Iran, Pakistan, India. It's been a long journey. So guys, this is their setup and ये van है इनकी और camping van बहुत ही beautiful है और You have to show the front. हाँ front. I think you made it. Nicely carved out. Is it from Pakistan? Yes. See, I got it. Yeah, this also, but we are losing all of them. Slowly. Yeah. So India and Pakistan have the most beautiful trucks in the world. Like in Germany, we just have them as they are new and they're super boring. So we boring. decided to pimp it up like that. so ये जो एम्बुलेंस थी ना ये पहले थी ये जो वैन है पहले एम्बुलेंस थी मर्सिडीज की और फ्रेडा और सेबस्टियन ने इसको मॉडिफाई किया पूरा का पूरा. चलो आपको दिखाते हैं वैन. लेट्स गो इनसाइड वैन एंड लेट्स शो इट. Maybe we can stop and clean. No. It should be real. So it's a nice and lovely setup and dream of me. One day I will also have. Let's hope and fingers crossed. So ये setup है पूरा का पूरा. ये बेड है. Then it's a kitchen. अभी रात को खाना खाया है और सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया. सफाई करनी है. They need to clean it now. And ये हीटर और बुखारी भी बोल सकते हैं. कश्मीर में इसको बुखारी बोला जाता है. और oh sorry. So this is a front cabin, Mercedes Benz. अब ये तो हो गया वैन टूर. अब एक अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं. Don't miss the gear stick. Which? The gear stick. Oh. Yeah, totally good, man. And good, different expression in different direction. Laughing Buddha. Yeah. So बात करते करते हमें कुछ पता चला. अभी उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. तो जैसे मेरा प्लान था मेरा जो प्लान था वो ये था कि अपनी जर्नी को लास्ट ईयर से मैंने ऐसे कंटिन्यू किया था कि स्टार्टिंग में मैगी सेल करके अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी. जब कैश खत्म होता था मैगी सेल करता था. तो आई टोल्ड देम माई आइडिया एंड सडनली दे टोल्ड मी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. they will tell everything. I work in a photo studio and we make photos for the biggest company like Nestle and Unilever. And as I worked there, I made some research about Nestle and how they grew up. There are also nice documentaries about it. And so how Nestle grew up is they sold baby milk to African countries. First they gave it for free and then they charged it. And the problem was that it contains 50% of sugar. If you turn around the package, you can check it. And what sugar actually does, it's a drug, makes you addicted, especially for small children. So what happens if the children drink this mother milk, this artificial milk, for too long? It's bad for their health for sure, but also they become addicted and they don't drink the mother milk, the natural anymore. So the problem is Nestle, they gave the milk first for free, then they charged it, and what happened was that in many African countries the people were not able to buy it, and the thousands and thousands of children just died, and it's still going on. I just recently should buy a milk for a guy, and he really thought it's so healthy. Yeah, and it's sad. I think that people have to know it. सो गाइस ये फैक्ट्स सुन के हम भी थोड़े शॉक हो गए. और जो हिंदी में जिनको समझाना चाहे मैं उनको हिंदी में समझा देता हूँ.
फ्रेडर जो हैं और सेबेस्टियन जो हैं ये फोटोग्राफर हैं बाय प्रोफेशन, और इन्होंने काफ़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम किया है जिसमें यूनिलीवर और नेस्ले दोनों के दोनों हैं। तो जब ये काम करते करते इन्होंने रिसर्च की, तो रिसर्च में इनको पता चला कि नेस्ले जो प्रोडक्ट्स बनाती है बच्चों के लिए, उसमें जो शुगर कंटेंट है वो है 50% से अबव, जो कि बच्चों को एडिक्टेड बनाता है, स्पेशली द मिल्क प्रोडक्ट्स दे मेक। और बच्चे जब उस चीज़ को पीना शुरू कर देते हैं तो उसको एडिक्टेड हो जाते हैं और मदर मिल्क का जो मिल्क है उसको छोड़ देते हैं। अब दिक्कत कहाँ आई, पहले तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको फ्री में बांटा, स्पेशली मे बी इन अफ्रीका एंड इन साउथ ईस्ट एशिया ना। Yes. तो फर्स्टली इन्होंने फ्री में या काफ़ी नॉमिनल रेट्स पे बेचा है इसको और दिया है ताकि लोग एडिक्टेड हो जाए, और उसके बाद आज बच्चे जो है उसकी तरफ एडिक्टेड हो गए, तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस भी नहीं मिलते और ग्रोथ भी रुकता है। तो फ्रेडर और सेबेस्टियन तो अवॉइड करते हैं लिटरली कि इस चीज़ नेस्ले और यूनिलीवर को अवॉइड किया जाता है। तो अब हम भी अपनी आने वाली जर्नी में जो है इस चीज़ को अपने रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि हम भी अवॉइड करेंगे, और आपको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी इन चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाएं, खास करके छोटे बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उस चीज़ों को अवॉइड करें। और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उस चीज़ को और अच्छे मैसेज को जहाँ तक हो सके वहाँ तक पहुँचाएं, ताकि कुछ अच्छा कर सकें, कुछ अच्छा चेंज लेके आ सकें। टुगेदर वी कैन चेंज द वर्ल्ड एंड वी कैन मेक इट ब्यूटीफुल एंड लविंग। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी आज हम भी यहीं पर कैंप करेंगे और ये भी यहीं पर, और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे और कौन सी अच्छी पर्सनालिटी मिलती है जो वर्ल्ड को चेंज कर सके। सो बाय बाय।